Hello everyone, I'm Shraddha and welcome back to my channel. So I just completed my 21 days challenge. If you haven't watched it already, I will link down few of the videos, or rather few of the days in the description box. So for those who did not watch any of the video, I'll tell you what the challenge was. Basically, I had taken up this challenge for 21 days wherein I wanted to set a routine and adapt to a few good habits which I haven't been following since a few years now. Very basic like time pe sona, time pe utna, rather jaldi utna at least around 7 a.m. in the morning. Apart from that, eating clean, working out daily, studying daily, uploading the content daily, basically being consistent with a lot of good habits and setting up a productive and healthy routine, what my main motive was. And this video is going to be all about me telling you things that I learned from my 21 day challenge. I thought ki sirf baat karna would be very lecturing kind of video and people would get bored of it. So I thought to do something along with it. So I thought ki let's do makeup because that is what I love and that is what I love watching and doing. So let's do it. So I've noted down a few points in my diary. And I'll tell you one by one. I'm not gonna explain how I'm gonna do my makeup because that is not the point of this video, right? So I'll go on doing it and I'll tag the products which I have used in the description box. So the lesson number one is you won't be consistent. Yes, you heard it right. You won't be consistent, and that is absolutely fine. Like, there have been days when I have missed my gym, I have missed my study routine, when I have missed posting. There have been so many days when I haven't posted any of the day, and I felt like, what will my audience think now? I'm not being consistent. I was trying to be a source of motivation for a lot of people, but then मैं खुद ही नहीं कर पा रही हूँ. फिर why would people look up to me, why would people watch my content? I used to feel so demotivated, and main motive of the challenge was to be consistent, right? और मैं वही चीज़ अगर नहीं कर पा रही तो फिर I used to feel extremely sad and stressed about it. But then finally I've started understanding that it is not always possible to be consistent. You can be, you need to have a very high dedication for that. एंड समटाइम्स हो जाता है, आदत लग जाती है कुछ चीज़ों की. जैसे मैं पहले सनस्क्रीन नहीं लगाती थी एंड आई ट्राई टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद इट. नाउ आई एम एट अ पॉइंट वेयर I apply sunscreen 2 times a day. I know it's not a huge thing, but मैं सिर्फ example दे रही हूँ. It's same with other habits. For example, gym. Starting में you are not used to it. Your body is not used to it. Your mind is not used to it. Your brain is not trained कि हर रोज हमें gym जाना होता है. And you feel like skipping it on some days. You forget. I have literally forgotten to visit the gym on few days. कभी कभी जिम बंद हुआ करती थी, तभी लेजी लगता था कि यार बंद है, अब क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं. वो मोटिवेशन नहीं रहेगा अगर आदत नहीं हुई तो. यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, यू आर गोइंग टू बी इनकन्सिस्टेंट. अल्टीमेटली टू अडेप्ट टू अ लॉट ऑफ हैबिट्स एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? So yes, that was my first point. So the second lesson that I learned was managing my time well by planning everything. Now I cannot tell you how important planning is. There have been days कि मैं सुबह उठती थी and I used to feel clueless, and there used to be days जब मैं इधर रात को प्लान करके सोती थी या फिर सुबह उठते ही जैसे ही मेरा जिम ब्रेकफास्ट हो जाता था वैसे ही मैं पहले नोट डाउन करती थी. आई हैव दिस बुक, मैंने आई थिंक मेरे 21 डेज वाला लॉन्ग फॉर्म वीडियो जो था उसमें भी बताया. हैव दिस बुक विच इज अ 3 month जर्नल. देयर आर दीज डेज. अभी इसमें इन्वर्टेड दिख रहा होगा बिकॉज आई एम फिल्मिंग इन द फ्रंट कैमरा, बट देर इज द सेक्शन जहाँ पे टाइमिंग्स लिखे हुए हैं एंड यू कैन लिटरली प्लान कि कौन से टाइम पे तुम्हें क्या करना है. एंड देर आर लाइक टू डू लिस्ट का पर्सनल एंड वर्क section. Then there is a habit tracker, there is a notes page, and there is this weekly tracker as well jahan pe you can track your food habits, you can track other habits, you can note down the top tasks for the day, you can note down the daily work that you need to complete.
सो या जब तुम प्लान करते हो, बेसिकली लेटिंग योर माइंड नो दैट, लेटिंग योर ब्रेन नो दैट कि 3 से 4 बजे तक मुझे टास्क नंबर 1 कंप्लीट करना ही है, वेदर इट बी फॉर मी फिल्मिंग, एडिटिंग, completing a section of a course, completing a part of the project, or attending the class, or going to the gym, or having something healthy, or just tracking my water habits. Usually write down whatever I want to do in the morning. हर एक घंटा नोट किया रहता है कि इस घंटे में मुझे यही करना है. अभी अगर मैंने लिख के रखा है कि मुझे 3 to 4 ये करना है, तो नॉट नेसेसरी कि वो हो ही जाएगा. समटाइम्स इट डज हैपन कि 3 to 4 करना है, वो कभी कभी पुश हो जाता है 4 to 5 में, एंड दैट इज़ फाइन. द होल पॉइंट ऑफ प्लानिंग इज कि यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ द टास्क ऑफ द डे, और एटलीस्ट it's like you're kind of training your brain, right? I just want to be aware कि मुझे आज क्या क्या करना है और मेरे पास कितना टाइम है. नहीं तो there have been days जब मैंने सुबह प्लान नहीं किया और सिर्फ मन में सोचा है कि हाँ आज ये कर लूँगी, and I haven't written down anything, I haven't planned as such. On those days literally ऐसे हो जाता है कि मैं सोचती हूँ और मैं लिखती नहीं हूँ. मैं बस सोचती हूँ कि मुझे ये करना है और फिर वो काम रह जाता है. I either forget it or I just feel कि I'll do it later, और फिर रह जाता है. According to me, planning is very 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 important. It helps you manage your time so well, and trust me, if you are my age or little younger or older than me, and I think you probably know how important managing time is, because काम रह गया तो रह गया, फिर pile up होते रहता है, and then you don't know what to do, you are confused, you are stressed, you have a lot of burden, and that is, trust me, not good. I am a person who procrastinates a lot, and trust me, if you are in that category, you need to start planning now. Just give it a try, just give it a try for once, and you will know why I'm stressing on it so much. I never used to plan my day until past 2 years, and I swear it has changed the way I work. I have become so much more disciplined. And मतलब यार घर पे बोलते रहते हैं ना कि discipline is very important, you should know when you have to wake up, you should know where you have to sleep. मैं सोचती थी यार मेरा काम तो हो रहा है ना, क्यों मैं जल्दी सोऊं, मैं क्यों देर से ना उठूं, मैं क्यों जल्दी उठूं, मैं क्यों डिसिप्लिन्ड रहूं. जब मेरा इनडिसिप्लिन रह के मेरे काम खत्म हो रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है. बट देन दैट यूज टू बी व्हेन मैं बहुत छोटी थी और तभी उतना ज़्यादा वर्कलोड था नहीं. अभी भी आई एम नॉट वर्किंग, राइट, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, सो अभी भी उतना स्ट्रेस नहीं है. बट देन एज कम्पेयर टू क्लास 10 में जो होता था, उससे ज़्यादा ही काम होता है. मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि हाउ इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन इज. आई नो मेरे ऐसे कंसीलर वाले फेस पे आई एम नॉट श्योर कि if you are able to take me seriously or not. The third lesson that I learned from the 21-day challenge is that on some days you just won't feel like it. कुछ करने का मन नहीं करे. It doesn't depend upon, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ किसी के साथ झगड़ा हुआ है इसीलिए, या फिर कुछ डिप्रेसिंग मूवी देखी है इसीलिए, या फिर कोई डिप्रेसिंग सॉन्ग सुना है, या फिर किसी चीज़ में मार्क्स कम आए और रिजल्ट देख लिया है. हमेशा कोई रीज़न होगा ही, ऐसे ज़रूरी नहीं है. One fine day you might wake up and feel like not doing anything. And trust me, there are such days. That I have been through it and it's not good. बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर आ जाता है. Like if you have committed to yourself कि इस हफ्ते में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, and because of that commitment you are aware how important every day is. And if suddenly you wake up and you feel like not doing anything, तो स्ट्रेस आ जाता है कि शिट अब क्या करना है. आज मैंने ये कोई एक्स टास्क का एक्स पार्ट नहीं कंप्लीट किया, तो आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय द एंड ऑफ द वीक. एंड आई गेट इट, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल. वॉट आई डू ऑन दोज डेज इज़ कि मैं बहुत ज़्यादा, आई डोंट बी वेरी हार्श ऑन माई सेल्फ. आई डू पुश माई सेल्फ अ लॉट, आई डू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ द बेड. और फिर मैं ट्राई करती हूँ कि आई जस्ट गो एंड टेक अ क्विक हॉट वाटर शावर. मुझे बस उससे बहुत रिफ्रेश फील लगता है कि इट्स अ न्यू स्टार्ट. आई जस्ट गेट दैट. आई डोंट नो, is it a psychological fact or what, I don't know, but taking a good hot water shower helps you push yourself a lot more.
If you're feeling sad about something, just note down your thoughts. Journaling again is very, very important. There are days when you feel extremely low, you feel depressed, you feel like crying. इमेजिन करो कि तुम्हारे मन में बहुत सारा कचरा भरा है एंड यू आर पोरिंग इट आउट समवेयर. आई डू एग्जैक्टली दैट कि मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, मैं कोई भी नोट्स ओपन करती हूँ, कोई भी पेज ले लेती हूँ एंड आई जस्ट नोट डाउन जो भी दिमाग में चल रहा है. स्ट्रेस लग रहा है, डिमोटिवेटेड लग रहा है, जो भी दिमाग में वर्स्ट थॉट्स आ रहे हैं, देन यू विल नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू. आई कैन नॉट गारंटी कि उस चीज़ से तुम्हें कोई सोल्यूशन मिल पाएगा कि नहीं, बिकॉज sometimes I do find a solution while thinking about my thoughts, while noting down my thoughts, and there are some days when I don't. So that's fine. But मुझे पता है कि अगर 100% स्ट्रेस है तो मिनिमम टू मिनिमम 60% तक वो स्ट्रेस आ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, और तुम्हें एक पुश मिलता है टू कंप्लीट द टास्क्स ऑफ द डे. यू हैव लाइक 4 tasks assigned for the day. Try to complete at least 2 of those, or at least 1 of it, or at least half of it. कुछ कर लो. Now there was a particular day जिस दिन मैं उठी and I felt extremely demotivated. मुझे बस मन नहीं किया जिम जाने का, मुझे बस मन नहीं किया उठ के ब्रेकफास्ट करने जाने का, मुझे मन नहीं किया कुछ शूट करने का, कुछ पढ़ने का, या कोई कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क करने का. I did not feel like doing anything and I felt so weird because that feeling was new to me in the 21 days challenge. I have felt that before, but I haven't stressed about it a lot because तभी कोई commitment नहीं होता था. Now I was accountable because मैंने एक decision लिया था to do it. So that is why I felt more stressful and I ended up wasting the entire day. I kept thinking and overthinking over the same thoughts. I was like, I was caught up in that bad space so much that I couldn't get out of it, and I ended up wasting the entire day. And just with the thought and the burden of the fact that I have wasted the entire day, I ended up wasting the next day as well. So trust me, it is very, very, very bad. Don't just keep thinking and overthinking about the same thought and the same emotion. Just write it down, just try to talk to somebody, or just do something you like. For example, I like doing makeup. I did not do that back then, but then I'm thinking कि अगर उस दिन मैंने थोड़ा सा खुद को पुश करके मेकअप कर लिया होता तो मेरा मूड बेटर हो जाता. या फिर if you like painting, paint it. If you like poems, just write down a poem. Or if you like listening to songs, oh my god, listening to songs is so important. Music is the best thing in the world, I swear. मैं बस देर आर डेज व्हेन आई जस्ट प्ले सम बॉलीवुड सॉन्ग्स, मेरा जितना लेजीनेस होता है, जितना सैडनेस होता है, जितना आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग वाला फीलिंग होता है, जस्ट vanishes and I feel so refreshed, so excited, so motivated just by listening to the songs. मैं मेकअप करना ही भूल रही हूँ कब से. आई एम जस्ट टॉकिंग और मुझे याद ही नहीं रह रहा है कि मुझे करना क्या है, व्हाट टू डू नेक्स्ट. लेसन नंबर 4 इज adapting to the unexpected situations is truly a skill. And I have come across so many moments जहाँ पे मैंने कुछ सोचा होता है, ये करूँगी वो करूँगी, और फिर एक unexpected situation create हो जाता है and I get stuck there. I don't know what to do. मेरी दुनिया हिल जाती है कि I have mentioned it in the short form videos also कि there was a day मैं गई attendance देने, छुट्टी थी. I came back. I ended up wasting half an hour in the process. और फिर क्योंकि मैं बाहर जाके आई थी, I ended up scrolling on my phone. ये तो बहुत बार होता है कि मैंने 1 घंटे में एक टास्क कंप्लीट करना है सोचा होता है, और फिर मैं फ़ोन स्क्रॉल करने लगती हूँ और फिर 1 घंटा वेस्ट. अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. जिम गई, जिम क्लोज्ड, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. इन दैट केस मैंने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए थे. यू कैन डू समथिंग similar to unexpected situations will occur and you will feel lost in those. Overcoming those situations, fighting with those situations, and finding out an alternative to to deal with it is truly a skill. And I feel कि मैंने थोड़ी सी वो skill develop कर ली है. I'm not perfect at it. I still do feel lost and I feel helpless and clueless in the situations which occur so unknowingly and as a surprise to me. But then yes, अभी तो since I am like 21 right now, I'm pretty sure कि अभी तो ये सारे challenges बहुत
छोटे स्केल पे आ रहे होंगे और बहुत कम आ रहे होंगे. आई एम प्रिटी श्योर इफ देर आर older people who are watching, they must be thinking about some bigger unexpected situations that they have come across and fought with them. So for example, तुम्हें कोई इवेंट अटेंड करने जाना है, बारिश आ गई. Unexpected situations आते रहते हैं, and you have to find a way to deal with them somehow. और नहीं भी अगर मिल पाता कोई भी, तो that's fine, it's absolutely fine. नहीं हो पाता, things what is meant to be will happen. लेकिन इसी थॉट से अगर चलते रहोगे तो कोई टास्क खत्म नहीं होगा. You need to try to find a solution. If not, it's fine, but trying and working hard is very, 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 very important. Lesson number 4 is that the small wins are just as good as the big ones. Now, why am I saying that? Because when you're working, basic human tendency होती है कि when you get rewarded for your small wins, you feel motivated and you feel like pushing yourself more, and you just get that energy, and it's kind of fuel to your efforts. कोर्स कर रही थी जो बहुत लंबा कोर्स था. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 15 आवर और 20 आवर कोर्स. और मैं जब वो 2-3 हफ्ते के लिए कर रही थी, तभी देयर वर स्मॉल सेक्शंस इन इट. सो वेन एवर one section used to get completed, I used to feel like a achievement, and that achievement actually needs to be celebrated. उस दिन पे अगर मैंने अपने लिए कोई फ्री टाइम नहीं रखा है या बहुत कम टाइम रखा है, तो मैं उसको हाफ एन आवर से एक्सटेंड कर दूंगी. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आई यूज टू डू दिस एज अ रिवॉर्ड कि आज मैं कोई एक मूवी देख लूंगी बिकॉज मैंने 2 सेक्शंस कंप्लीट किए, एंड आई यूज टू फील लाइक एन अचीवमेंट एंड दस अ रिवॉर्ड. छोटे बच्चों को कैसे कोई टास्क कंप्लीट किया तो हम छोटा सा चॉकलेट देते हैं, वैसे ही एज एन अडल्ट this is the way of rewarding myself. So yes, rewarding yourself and feeling special and feeling the sense of achievement even after completing smaller tasks is also something as important as the happiness that you get after completing the bigger tasks. So the 5th lesson that I have learned from the 21-day challenge is that some habits stay with you forever, whereas there are a few habits which you end up losing track on. For example, in my case, I used to wake up at least at around 7 every day. But now, ever since the challenge has ended, I have woken up at 8:30 every day, which I want to get it fixed. Now, the lesson number 6 is कि जो task तुमने start किया है, don't get up without completing that. Because then if it's a like मतलब one sitting में complete होने जैसा task है, तो don't just get up before completing it, because if you do, फिर वो रह जाएगा, फिर तुम you will end up procrastinating and wasting a lot of your day. So just try to complete the task and then move to the next one. मैं एक काम करती थी कि I used to set up a timer कि अगर पूरा टास्क भी कंप्लीट नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 2 घंटे तक स्ट्रेट, जब तक वो टाइमर नहीं बचता तब तक आई विल keep continuing the task. I will not stop doing it. So that is very important. Also, to look at it from a different perspective, it can also be कि if you are starting a task, for example, if you are a student, मैं क्योंकि एक स्टूडेंट हूँ तो मैं उस पर्सपेक्टिव से ही सोच पा रही हूँ, मुझे वैसे तरह के ज़्यादा एग्जाम्पल्स आ रहे हैं दिमाग में. इफ़ यू हैव स्टार्टेड डूइंग अ मैथ प्रॉब्लम और तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट देयर विल बी अ सोल्यूशन इट टू इट, राइट? ऐसे नहीं कि तुम्हें करने नहीं आ रहा है तो देयर वोंट बी अ सोल्यूशन और इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट. इट इज़ पॉसिबल, समबडी हैज़ डन इट. सो जब तक तुम वो सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर लेते, जब तक तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते, डोंट गिव अप, just complete that problem. Don't get distracted. Or in these cases, you need to be a little mentally strong to just overcome the issue of procrastinating and getting distracted. So yes, these were some of the lessons which I have learned through the 21-day challenge, and I'm really, really grateful to all of you to have given so much love to it. I mean, I literally couldn't have asked for more. I mean, I am improving my habits
while I am putting out content on the internet, and I'm very very glad, very happy, and very grateful everyone who is watching and supporting my videos. Also, this is my Instagram page and my Instagram handle. I post some real time updates on the stories, so you can go so you can go and connect there as well. So yeah, this is the final look. I'm not very great at multitasking, but today I gave it an attempt, and let me know. I know it wasn't a perfect video. I don't know if I was able to explain my thoughts and the lessons that I've actually learned through it, but then because I was doing my makeup and I was talking and I was thinking, I was doing 3 tasks at a time, and I'm not very great at multitasking. You told them already. So, yes, let me know how you like my videos. As I always ask you for suggestions and advices. And if by any chance any of the senior creators are watching it in this, I would really love to connect with you as a source of guide, because I really do need that. And to all my audience, thank you so much for watching all my videos and supporting me so much. It really truly means so much to me. I hope you enjoyed watching it. I hope कि मैंने at least एक दो लोगों को तो motivate किया होगा इस process के through, इस challenge के through. If I did, I'm extremely happy. I feel that was the whole point of the video, कि while improving myself, I wanted to let a message out into the world that it's never too late, right? I am in my 4th year. I am 21-year-old now, and these are some basic habits which I do not have, and I haven't adapted them through my life. Or even if I had, I have ended up losing through the years. But then it's never too late to restart or take up a challenge. Look after your health, look after your career, or just do whatever you love. So yeah, if you love and enjoy watching my content, then please do like this video and subscribe to the channel and share it with your friends and follow me on Instagram, and it would mean so much to me. That's it for today's video. I'll see you in the next one, and I keep posting the shorts, so I'll keep meeting you on those shorts as well. Until then, bye bye.